everyone. How are you all and how your preparations are going on? I hope you all are doing great. In this video, I have covered the summits and conferences for the month of December 2025 with the help of top 15 MCQs. So let's go ahead. The first question we have is the theme of the 16th DGP ICP Conference 2025 chaired by PM Modi was प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित 60वें डीजीपी आईसीपी सम्मेलन 2025 का विषय था ऑप्शन सी विकसित भारत सुरक्षित भारत 19-20 दिसंबर को क्षेत्रीय एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस की मेजबानी भारत का कौन सा राज्य करेगा? Which Indian state will host the regional AI Impact Conference on December 1920? So the option C is correct, Orissa. The second WHO Global Summit on Traditional Medicine was held in which city? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का दूसरा पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था? So the option C, that is New Delhi. ट्वेंटी 2026 में आयोजित होने वाला 7वां भारत अंतर्राष्ट्रीय समुद्री शैवाल एक्सपो और शिखर सम्मेलन किस शहर में होगा? Which city will host the 7th Indian International Seaweed Expo and Summit 2026? So the correct option we have is Kochi. India will assume the chairship of the International Institute for Democracy and Electoral Assistance, International IDA, for the first time on which date? भारत किस तिथि को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनावी सहायता संस्थान इंटरनेशनल IDEA की अध्यक्षता ग्रहण करेगा? So the option C, 3rd December 2025 is the correct answer. The India AI mission highlighted at the Regional AI Impact Conference 2025 aims to train approximately how many people across India? Regional AI Impact Conference 2025 में हाईलाइट किए गए इंडिया एआई मिशन का उद्देश्य पूरे भारत में लगभग कितने लोगों को प्रशिक्षित करना है? So option C, 10 lakh. India is hosting the 20th session of the Intergovernmental Committee for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage ICH in 2025 at which location? भारत 2025 में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत IECH के संरक्षण के लिए अंतर सरकारी समिति के 20वें सत्र की मेजबानी किस स्थान पर कर रहा है? So, what is the answer? Option B, Red Fort, New Delhi. The Zahakar Sarathi initiative launched at the Earth Summit 2025 primarily aims to Earth Summit 2025 में शुरू की गई सहकार सारथी पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? So, option B, digitally strengthen cooperative institution and rural economy. Next question we have is, India will host the second WHO Global Summit on Traditional Medicine in December 2025. Which of the following is a key focus area of the summit? भारत दिसंबर 2025 में पारंपरिक चिकित्सा पर दूसरे विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। निम्नलिखित में से कौन सा शिखर सम्मेलन का एक प्रमुख फोकस क्षेत्र है? We have the option B, that is correct. Evidence-based integration
Ayurveda. Next question we have is the Global AI Conclave 2025 aimed at advancing responsible AI is being jointly hosted by which institution? जिम्मेदार एआई को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित ग्लोबल एआई कॉन्क्लेव 2025 की संयुक्त मेजबानी कौन-कौन सा संस्थान कर रहे हैं? We have the option C, that is correct. IIT Madras and India AI Mission. Next question we have is which key approach is emphasized in India's wildlife management resolution adopted at UNEA 7? UNEA 7 में अपनाए गए भारत के वन अग्नि प्रबंधन प्रस्ताव में किस प्रमुख दृष्टिकोण पर जोर दिया गया है? So the option C, shift from reaching firefighting to proactive prevention and preparedness. आग बुझाने के प्रति क्रियात्मक रणनीति से हटकर सक्रिय रोकथाम और तैयारी पर ध्यान केंद्रित करना. Next, the question we have is what is the theme of the 5th National Conference of Chief Secretaries chaired by Prime Minister Narendra Modi? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित 5वें राष्ट्रीय मुख्य सचिव सम्मेलन का विषय क्या है? So the option C is correct. Human capital for विकसित भारत. Next we have the main theme of the 5th National Conference of Chief Secretaries chaired by Prime Minister Narendra Modi was नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित मुख्य सचिवों के 5वें राष्ट्रीय सम्मेलन का मुख्य विषय था. क्या था? ह्यूमन कैपिटल फॉर विकसित भारत के लिए मानव पूंजी. So that's all for today, everyone. Thanks for watching. We're going to see you tomorrow with the next video. Requesting you all to please subscribe my channel and click on the like buttons and share to as many friends as you can. Just show me your support by writing the feedback in the comment box. And please do let me know that which other topic you want the video the next day. Please subscribe my channel and show me your support. Thank you all. Bye.